To this copy. All right. We start with business finance cost of capital. Majorly revision. This is majorly revision. Session will comprise of session one is we revise the COFC. Session two, we revise and we see the question. Session three will be question solving. Okay. This is your base for the day. This is a pre. देखो based on sources of finance, we understood there are two types of finances. One being equity, second being debt. Money put in by the shareholders in form of shares against money is equity. Money put in by the lenders in the business in form of debentures or secured, unsecured loan, it is debt. Another example of unsecured loan is bank overdraft. Now, why is bank overdraft unsecured loan? Because against your current account of a business, you can withdraw cash on interest. ठीक है? Now, for that cash on interest, the bank does not charge you any security or collateral in place. Hence, bank overdraft becomes an unsecured loan. यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, चलो. Types of equity finance. देखो, now sources are, one is ordinary share, second is preference share, and third is capital. Whenever I talk about return for ordinary share and preference share, by default this goes as dividend. When I talk about capital, this can be either dividend or can be any asset that the shareholder, in short, the owner would have put in.
So उसके अगेंस्ट में एनी रिटर्न दैट कम्स इन, अगेंस्ट एनी रिटर्न would be considered. Clear? Any doubts still here? No. ठीक है। हाँ जी कोमल, एनी डाउट्स? ठीक है। Now these returns for the investor, shareholder, or the owner of the company is denoted by K. Any return for the investor is equal to cost for the company. Hence, cost to the company in equity finance is denoted as K. Clear है? Yes. Any doubts still here? No. No. ठीक है। अब similarly for debt, any cost incurred is returned to the debt holder. So cost on debt is equal to KD for notational purposes. Since debt interest payments holds interest payments, the government allows tax deductibility feature, which makes the debt as a cheaper source of finance. Now, with consideration to that feature, cost of debt then is denoted by KD 1 minus T. Clear? Yes. Yes. ये है तुम्हारा बेस टू अंडरस्टैंड दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड दिस इज हाउ यू डिनोट देम। अब you have to understand one more thing when you're calculating returns. Returns can be calculated on two levels. A, nominal level. B, on the market value. Nominal level is the face value level of the investments made, be it debt or equity. Market value, it is the market rotated actual realistic value of the investments, be it debt or equity. The rationale of the market value is that equity instruments such as shares and तुम्हारे debt instruments
debentures, loan notes, etc. They are traded on the stock exchange. Hence, the demand and supply impacts the actual prices to it. Clear? Yes. चलो अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। देखो, देर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Either we understood that dividend is there and capital is there. So technically, if the returns are dividend and they are very much dominating capitals to the cap structure, the cost of equity will be derived from those returns. So these returns or so-called cost for the company's perspective get calculated through their own notations. One being the dividend valuation model, two being the capital asset pricing model. Now, when I see a dividend valuation model, there are two methods to it. One is A is through constant dividends. B is through dividend with growth. Now, when I even bisect growth, so one dividend, so technically B dot one will be dividend with growth through extrapolation method. The B dot two will be dividend with growth through Gordon's model. Now, what is extrapolation Gordon method? These are ways, these are ways through which you can estimate the growth of the dividend. How we learn this ahead? The capital asset pricing model is one model wherein you will understand in two ways. One is the normal CAPM. We call this CAPM. We call this as DVM here. So normal CAPM, B is the risk adjusted cap. ठीक है? Risk adjusted CAPM means when we split the business risk and the finance risk in such a way that in case of any project or company that needs to be
taken over with the intention of shareholders' wealth maximization, we can incorporate the relevant risks. Because there is high chances that during diversification, the current company may switch industries or products or may take up an investment opportunity, which will enhance the overall objective of financial management. देखो, जब भी कैपेम यूज हो रहा होगा देयर विल बी टू scenarios to it. Either one company taking over another company or one company taking up another project. And that is the reason when we did investment appraisals initially, okay, we technically learned that we were using certain debt and equity methods over there in certain questions that were rooted through CAPM. That was the thought process. However, that is one way of incorporating risk because every project comes with certain risk, and if the higher the risk, higher the return. Now, moving ahead, there are certain assumptions that you need to undertake. So we start with dividend valuation model. This model has certain assumptions. One, future income stream of the shareholders is the dividend that is paid out by the company. Dividend will be paid in perpetuity once per year. They can be either constant or they can be growing at some fixed rate. Fourth, all shareholders' expectation is same. Hence, the demand will be the same rate of return. Fifth, we operate in a perfect capital market. Now, how do you calculate a share price? Share price is equal to dividends paid in perpetuity discounted at the shareholders' rate of return. Formula 1. This will not be given to you in your exam. So you have to learn it. Now, when
Now, first we will talk about constant dividends. DVM with constant dividends. The formula is, which is not given to you again, so you have to learn. P0 is equal to D divided by KE. Now, where D is equal to constant dividend from year 1 to infinity. P0 या PO is equal to, we'll make it PO for better. PO is equal to share price now in year 0. Now KE is equal to shareholders return required expressed in decimal. When you are expressing in exam, you will convert into you will convert into percentages. When you are solving, you will convert into decimals. Clear? Yes. Now, if I have to rearrange and figure out my KE, so technically what I can do is KE is equal to D divided by P0. Rearranged the formula. What do we learn? We learn this. We first understood how do we calculate share price at year 0. Now, after the share price has been traded for 1 year, you are supposed to get some dividends. Now, those dividends will be technically a cost. So, rather than you learning out this, apologies, rather than you learning out this, it's better that you understand KE level itself. So, eventually, you can figure out how to calculate the share price. So there might be instances wherein you will be asked to calculate share price. You would be given cost of equity. You will be given dividend. So you have to be vigilant enough. The question can be turned around in any way. Clear? Yes. Chalo. Now we move to dividend with growth.
The formula is D0 1 plus G divided by KE minus G. Again, if I rearrange this, so, so KE is equal to, the top part will remain the same. This will become Q and this will be plus growth. So this becomes your formula. Agar you see there is a growth in dividend and they ask you to figure out the share price, then you will use P0 formula. Now you have to find out cost of equity, and technically you have to rearrange the formula. See, formula is going to remain one. You will have to keep rearranging it. Now that we're learning about cost, okay, so we'll learn only the cost formula. Whenever they talk about share price, we will interchange. If they ask us ever about the growth rate, we still will use a basic mathematics. We know how to do integers. We will transpose and get our answers. Now here G is equal to growth constant growth rate dividend D1 dividend to be received in 1 year. That is at time one. D0 1 plus G is equal to D1, which is equal to dividend just paid and adjusted to 1 year's growth. देखो बहुत बार क्या होगा, दे विल गिव यू D1, ठीक है, एंड दे विल गिव यू D0. You will have to figure out growth rate. So again you can rearrange and get it. What they will say you कि अच्छा dividend to be received in 1 years of time is this and dividend just paid is this much. How much is the growth rate? So technically D0 minus D1 हो जाएगा. जो बचेगा वो तुम्हारा ग्रोथ होगा, फिर उसके तुम ग्रोथ रेट निकालोगे. क्लियर? Yes. Yes. सो अगर मैं इस चीज को देखूं तो टेक्निकली ये चीज रेप्लिकेट होगी, जहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा D1. क्योंकि इसका अगर इसका एक्सपेंशन ये है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन ये होगा ना. तो याद तुम ये करोगे और ध्यान में ये रखोगे कि D0 1 प्लस जी इज इक्वल टू D1. क्लियर? Yes. अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स डिव शेयर प्राइस. देखो, वी विल लर्न इट थ्रू अ टाइमलाइन.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिविडेंड पे होना था इधर। ठीक है। एनी अब मैंने डिविडेंड से पहले, पे होने से पहले का जो टाइम है, मतलब इस पॉइंट पे से पहले का जो टाइम है और इस पॉइंट के बाद का जो टाइम है, यहाँ पर तुम्हारे शेयर प्राइस जो होते हैं उनको एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है, और उनको एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एलोकेट करी गई है, और उसका एक नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि उसको क्या मतलब होता है। और ये है तुम्हारा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डिविडेंड इस पॉइंट पे। दिस इज फॉर योर नेक्स्ट डिविडेंड, दिस टाइमलाइन इज फॉर नेक्स्ट डिविडेंड। अगर मेरा डिविडेंड यहाँ पे हुआ है तो राइट हैंड साइड में मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है, तो दिस टेक्निकली बिकम्स आफ्टर डिविडेंड पेमेंट, and this technically becomes before dividend payment. So the share price after your dividend has been paid, share price after dividend has been paid, is known as, is equal to x dividend share price. I gave you a classic example of your x, एक बार गई वापस नहीं आती। x का मतलब डिविडेंड जा चुका है, उसके बाद का जो शेयर प्राइस है। बिफोर डिविडेंड पेमेंट इज कम डिव शेयर प्राइस। बुलाती है पर जाने का नहीं, इसके लिए। Anyway, so before dividend payment has been done, it is the cum div share price. The moment dividend payment is done, it is known as the ex div share price. Now, dividend payment will also be known as dividend due. सोचने वाली बात है। बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा डिविडेंड ड्यू है और तुम्हें एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस देखना है, क्योंकि वही शेयर प्राइस होता है जो तुम्हारा स्टॉक मार्केट पे घूमता है। तो अगर जो मार्केट पे शेयर प्राइस घूम रहा है तो उसको मेरे को बेसिकली डिविडेंड के थ्रू ट्रैक डाउन करना है, एक्सक्लूडिंग द प्रीमियमनेस ऑफ द शेयर प्राइस। तो मैं कम डिव शेयर प्राइस माइनस डिविडेंड ड्यू करूंगा, तो मेरे को अपना ये पता चल जाएगा। क्योंकि एक्स डिव का मतलब क्या है, जब मेरा डिविडेंड हट जाएगा, और कम डिव का मतलब क्या है, जिसमें ऑलरेडी मेरा डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इंक्लूडेड डिविडेंड को हटा दूंगा तो मेरा एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस हो जाएगा। तो मेरा टेक्निकली एक्स डिव शेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या बना? That technically means x div share price is equal to cum div share price minus dividend due. क्लियर? यस। Yes. यहाँ पर कोई डाउट? नहीं। This is another formula that needs to be learned and understood. चलो, अब मैंने तुम लोग को इधर एक चीज बताई थी कि ग्रोथ इज बीइंग
estimated to two levels. One is extrapolation method and one is to Gordon model. ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो जी है, इसको कभी ना कभी तुम्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा। बहुत बार ये भी तो हो सकता है तुम्हें के ई निकालना है और तुम्हें ग्रोथ नहीं दी हो, तुम ग्रोथ कैसे निकालोगे? तो इसको एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ, दिस कैन बी डन थ्रू two methods. One is extrapolation method, wherein growth is equal to bracket open D0 divided by dividend n number of years ago raised to 1 minus n minus 1. Just a second, guys. Just a second. Allow me a minute. Sorry, guys. Yeah. Where D0, we already know, we'll pick it up from here. N is equal to number of years of dividend growth. जी का मतलब ग्रोथ है। So this is another formula that you will have to learn. Now another way is Gordon's growth model. So according to Gordon Baba, the earnings that are retained are to be distributed to the equity holders post all the obligations and the provisions for new projects or takeover. So according to him, growth is equal to B multiplied by RE, where RE is not equal to KE. RE means accounting rate of return on equity. Either this is given to you or you will apply investment appraisal technique. And B over here is earnings return retention rate. Clear? So these are Yes. ways to figure out your growth. One is extrapolation method. That what is extrapolation? Extrapolation is
Defining the growth on the basis of the past patterns of your dividend. There must be a pattern ki, for example, for a company has been running for 5 years. First day they must have given two, second they must have given four, third they must have given five, next year they would have given eight, then again they must have given 15. So that there must be an average that would be going on between them. That average number needs to be figured out. That is figured out through extrapolation. अनदर वे इज टू अंडरस्टैंड कि देखो, अगर मैं सारे अपने खर्चे निकाल देता हूँ जो मेरे कैश के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, या फिर जो भी मेरी रिटर्न्स के थ्रू बनते हैं कि मैंने अपना पूरा कंपनी का सब कुछ कर लिया, अब मैं एंड ऑफ द ईयर आ गया, अब मेरे पास इतना पैसा बचा है। अब जो इतना पैसा बचा है मेरे पास उसका मैंने रिटेंशन रेशियो देख लिया कि हाँ भाई मेरा रिटेंशन 40% है, मैं 60% डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं उसके थ्रू अपनी ग्रोथ रेट देख सकता हूँ कि भाई एक साल कुछ था, दूसरे साल कुछ था, तीसरे साल कुछ था, तो मैंने उसके बेसिस पे अपना ग्रोथ रेट डिफाइन कर लिया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थ्रू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। Now, there are advantages to it also, and there are disadvantages to it also. So, the advantages of DVM for your theory segment in section C also. What all we learned till now is purely theoretical. So, the advantage is this provides us a proper mapping of how return on equity is derived. Two, this is comparatively used more, so it is commonly used and is easier to understand because it relates, its relation is with the direct product that a investor thinks of. This is very applicable and intelligent use for dividend paying companies. Plus, those companies that pay constant dividend, they have the easiest way out to define the dividend. However, the problems that will come or disadvantages that I see when I look at this model does not undertake the market value of the equity shares, hence historically based. Two, I cannot see as an investor or a company how my future dividends would look like. If I could have seen that, then my dividends would have been for a company. If I take into myself a company shoes, I could have defined growth based on my future growth. But today I have to sit back and see my past patterns to define what I have to give to my shareholders in the future. The growth in the earnings of the company is not undertaken anywhere. I don't see any uh, capital being
infused somewhere कि अच्छा ठीक है, this much capital has been put in by shareholders, so as the capital increases with the growth of the company, the return is also increasing along with it. I don't see that sort of any relationship. Fourth, there was an assumption that we are in perfect capital market. In realistic terms, this is not true. You cannot always fulfill the demand, and there might be times that the supply may be more and the demand may be less. For large shareholders, according to business combinations in F7, they do not seem to have control on these variable returns. देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन एक स्टैंडर्ड है, एक आईएफआरएस है F7 में, यू विल सी, wherein the control of a company for a shareholder is where he or she can technically decide on to how much dividend that he or she needs to get the control. That is the variable return. Very accounting level of a thing and very practical level of a thing. Ki when I give money to someone, I would say, ki, boss, I need this much amount of return out of you. Or now it is me being in terms of loan, then it becomes debt. Now, when I'm putting up into a company, I always say for this much of equity return, I am putting in this much of money. Now, that control of 10% or 20% for money that I'm putting in, I cannot see somewhere coming through in the dividend evaluation model. Then what is the point of me putting in money to a company? Hence, that is one disadvantage. Now, before we move to a break, there is one more equity source, which is preference shares. Now, very clear. See, preference shares will be denoted for cost of equity on the preference shares. You will denote it as KP. The formula to it is KP is equal to D divided by P0, where KP is equal to cost of preference shares. P0 is X div market value of the shares, and D is equal to the constant annual dividend, preference dividend. See, as preference shareholders, you get a fixed amount as return, which is the dividend. That may comprise of some growth in next year or may not comprise of some growth next year. The growth is immaterial. You may get some amount of money irrespective of anything. Hence, you don't have the growth angle attached to it. So the 1 plus G
and the plus growth rate estimation comes out of the formula, and you're left with d divided by p0, which technically goes to the constant dividend formula. Very same formula that you see. The only difference is it is kp here and d divided by p. Clear? Yes. All right. This is cost of equity for you at the dividend valuation model rate. The next comes is cost of debt. But before we move to cost of debt, I will cover capital asset pricing model with you guys, which is a part of capital structure, the next chapter to COFC. However, it is used to estimate KE itself, incorporating certain sort of risks. So, in the next phase after the break of 15 minutes, we will sit back at 9:15 and understand the kind of risks and how is risk incorporated in capital asset pricing model to estimate KE. Moving on, then we will do cost of debt. Clear? Yes. Yes. All right. में Hello. करोगे creative जब बाद में करने में बन जाता like वीडियो को डेंस और I can't hear you सब clear. दे Hello. Yes. Were you able to hear Yogita? हाँ. हाँ अब Clear? आ रही है Yes. हाँ, ठीक है. So, yeah, but why loan notes? क्योंकि वो डेट और इक्विटी दोनों का काम करती है लाइक हम लोग को बाद में इंटरेस्ट भी आएगा वो तो कन्वर्टेबल की बात है ना यार, वो तो बहुत आगे की चीज है नहीं. और डेट इक्विटी का काम कैसे कर सकती है? लाइक वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट होती है ना बट वो कन्वर्टेबल डेट की बात कर रहे हैं ना, वो तो अलग चीज है. अच्छा वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का हो, वो तो और रिस्क लेना हो गया ना. डेट में तो मेरे को रिटर्न मिलने ही वाला था, बट यहाँ पर तो मेरे को वो भी नहीं मिल रहा इक्विटी में तो. हम्म सो दी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट इफ यू हैव टू सी, ठीक है, इज लोन नोट्स फॉर एनी इन्वेस्टर. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एट by hook or crook, the investor will receive, or debt investor will receive its returns through interest. So through interest, the loan notes become a obligation to be paid. Hence, irrespective of any situation, legally bounded, the interest payment makes it safer for the debt investor or any investor. Just to recap, एक चीज समझो. There are two types of risk: business risk and finance risk. Clear? Business risk is from the business activities of the operation. एंड रिस्क का मतलब हमेशा ये तो होता नहीं है कि आपको आप माइनस में चले जाओगे. रिस्क का मतलब सिंपल है कि मुझे कम मिल सकता है, या जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, तीनों चीजें. फिर अगर वो मैं एक रिटर्न इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोचूं तो, अगर मैं कंपनी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरी सिंपल प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिस्क ये है कि मैं शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को मैं उतना रिटर्न नहीं दे पाऊंगा जितना मैंने कमिट किया हुआ है. तो उससे मेरी शेयर होल्डर्स वेल्थ नहीं बनेगी. फाइनेंस रिस्क क्या कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन मेरे पे इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि मैं बिजनेस रिस्क का एक पार्ट हूँ, ठीक है, बट मेजरली मेरा कंसर्न है गियरिंग के ऊपर.
गियरिंग इज क्या, डेट टू डेट प्लस इक्विटी के रेशियो के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मेरा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए बताएगा कि मैं, हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं रीपे नहीं कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊँ, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। वहाँ कैपेम आके बोलता है कि मैं कुछ हद तक तुम्हारे रिटर्न्स को एस्टिमेट कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क उठा लेता हूँ और अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क में उसको इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ बिजनेस रिस्क के साथ, तो हो सकता है मैं कुछ हद तक एक एस्टिमेशन ला सकता हूँ इक्विटी के पर्पज से। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, मेजरली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मेरा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है आउट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनी ऑफ द मेथड, दे आर टुवर्ड्स द गोल ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन वेल्थ। तो अगर मैं उन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल रिस्क को एग्रीगेट करके अपने बिजनेस रिस्क के साथ मिला दूं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक हद तक एक सही कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, जिससे मेरी एस्टिमेशन बराबर चल सकती है। तो वो मेरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। बट वहीं अगर मैं एक और इन्वेस्टर का एक और पर्सपेक्टिव लूँ, तो वहीं एक शेयर होल्डर भी ये सोचेगा कि यार मैं इतने ही रिस्क की रिटर्न्स के साथ क्यों खेलूं, मैं एक रिस्क अवर्स भी इन्वेस्टर तो हो सकता हूँ। मुझे तो रिटर्न बिल्कुल उस पे चाहिए, नॉन रिस्की सिचुएशन में चाहिए कि भाई अगर गलती से भी गलती होए तो मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। रिटर्न कम आ जाए चलेगा, बट पैसा नहीं डूबना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो आज भी एफडी की तरफ भागते हैं। अब वो जो रिटर्न है जो तुम्हें मिलेगा बिल्कुल रिस्क फ्री सिचुएशन पे, एफडी की तरीके से, वो तुम्हारा रिस्क फ्री रिटर्न हो गया, कि ना प्रिंसिपल कहीं जा रहा है ना मेरा कहीं कुछ जा रहा है। तो एक इन्वेस्टर एक उसको कहाँ ढूंढ पाएगा? एक इन्वेस्टर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में ढूंढ पाएगा, कि गवर्नमेंट एक सबसे सेफेस्ट प्लेस है, कि कहीं कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट मेरा पैसा लेके नहीं भाग सकती। एनी पार्टी में कम एंड गो, बट आई हैव इन्वेस्टेड विद द गवर्नमेंट irrespective of anything, the government is liable to give me, not any political party attached to the government. So it becomes the safest option for me. Now after that, if I have to see for an investor what is the safest option, then it becomes loan note. Because a loan note, when invested into a company as a debt instrument, it is a legal obligation to pay off. I may choose not to pay a dividend, but I may have to 100% pay off a interest on the debenture. Now the debenture investment, now the debenture or a debt investment for any investor can be judged through certain parameters. So I break it down as there are certain panels to the debt. So if you see, your bonds are rated as triple A bonds, double A bonds, double A bonds, A bonds. Then you have triple B bonds. Then you have BB bonds. Then you have B bonds. Then you have CCC bonds. Then CC bonds. Then C bonds. Then you have D bond. And you have E bonds. So through through certain agencies such as Standards and Poor's of Fitch
of which they have ranked the bonds. So an investor can be a thoughtful person. So any bond that ranges from triple A to triple B is safe to invest. Rest all are to be marked as junk. So if a now what does junk mean? Junk technically means that I may or may not receive returns. The uncertainty of the returns, which means the bounce on receipts of the interest payments. Now, when it comes to AAA bonds, they are the highest riskiest bond, but they are marked as the highest quality ones because we know higher the risk, higher the return. Then you have high quality bonds. Then eventually you see you go to strong and then you come to medium. In junk, whatever you see are either speculative or highly speculative default. When I say they won't give you money, that technically means they're going to default on payments. And here they are into the situation either it can be speculative or high speculative. मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. यहाँ तक की बात क्लियर है. Yes. हाँ अब अगर मेरे को इन सब चीजों को सोचते हुए अगर मेरे को ये देखना है कि एक इन्वेस्टर कैसे पैसे बनाएगा या फिर उसका रिटर्न कैसे डिफाइन होगा, तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम क्या है? मेरा रिस्क प्रीमियम मेरा ये है कि देखो, अगर मेरा मार्केट में गवर्नमेंट मेरे को 8% देती है, 8% देती है, इफ गवर्नमेंट इज गिविंग मी 8%, दैट इज माई रिस्क फ्री. एंड माई रिस्क प्रीमियम इज एनीथिंग दैट आई अर्न, दैट आई एज एन इन्वेस्टर earn, or as a company provide to an investor over and above through any adjustments than the government return. मतलब 8% तो मैं दूंगा ही दूंगा. आपका गवर्नमेंट का रिस्क था ना 8%, मैं चलो मैं कवर करता हूँ एज अ कंपनी. उसके ऊपर मैं आपको 2% और दूंगा. समझ रहे हो? तो मेरा रिस्क प्रीमियम हो गया. जो 2% मुझे एक्स्ट्रा मिला, जो 2% मेरे को ऊपर मिला, वो मेरे लिए रिस्क प्रीमियम हो गया. That is the premium that I'm earning out of it. बात क्लियर हुई? Yes. We know business risk means systematic risk. That technically means irrespective of any industry a company operates in,
be it presently or in future, this risk won't change. Then you have unsystematic risk. The risk where the operations are impacted of the business through financial risk and other prevailing factors in the industry. So CAPM comes and tells कि that we can adjust the cost of equity, and can e- this can be, I would say, can be computed as KE is equal to RF plus beta equity RM minus RF, where RF is risk-free returns, beta equity is the risk, RM is the return on market portfolio, and RM minus RF is equity risk premium. Now, what is return on market portfolio? Return on market portfolio means कि मेरी मार्केट में कौन सी प्रिवेलिंग रेट है, कि देखो मेरा रिस्क फ्री रेट तो 8% चल रहा है, मार्केट में ऑन एन एवरेज रिटर्न मुझे 10% मिलता है। ठीक है, तो मेरा प्रीमियम कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो मेरा प्रीमियम कैलकुलेट इस तरीके से होगा कि मार्केट का जो रेट है उसमें से अगर मैं रिस्क फ्री रेट हटा देता हूं, तो जो मेरा बचेगा वो मेरा बनेगा रिस्क फ्री रिटर्न, मेरा बनेगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम, क्योंकि मेरा पैसा किस में जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है। तो मेरा रिस्क काय का हुआ, इक्विटी का हुआ, उसके ऊपर मैं क्या कमा रहा हूँ, प्रीमियम कमा रहा हूँ, मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम हो गया। मैं मार्केट से कंपेयर करूंगा। यहां तक की बात क्लियर हुई? यस। So this is CAPM without risk adjustment, where we made sure that beta equity is the measure of risk. Now, how do we adjust it? We will split it. So your beta will be split as per the risk that we learned. So beta is split into asset beta, which we denote as a measure of business risk. Then you have then you have equity beta. We denote as B as a measure of finance risk. However, in the formula out here, it is beta asset
प्लस बीटा इक्विटी ऑन अ ब्रॉडर सेंस. क्लियर? Yes. Now how do we find the beta? See, beta is, उसके लिए we'll have to understand बीटा का यूज केस. बीटा यूज केस is on two levels. Level 1, it is to estimate the WACC, wherein the adjustment is done through understanding whether the projects or any takeover that is being made into the another industry from the current one, and by making sure that new industry plus current industry are working together. मतलब कि अगर if I am in a hot air balloon industry, which is my current industry, and I want to get into water industry, मतलब for example water sports industry, ठीक है, तो as a business I have to make sure that both of them are running. कि अब जब मैं अगर हॉट एयर बलून में हूं और अगर मैं वाटर के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके बाद मेरा हॉट एयर बंद नहीं होना चाहिए, हॉट एयर भी चलेगा और मेरा जो वाटर वाला है वो भी चलेगा. बात क्लियर हो गई यहाँ तक? हाँ ना. Yes. अब लेवल 2 इज, इट इज टू एस्टिमेट द रिस्क इन अ प्रोजेक्ट फॉर अप्रेजल. देखो बीट, अगर मैं बात करूं बीटा की, तो तुम्हें बीटा की वैल्यू एक चीज के थ्रू और मिल सकती है, वो है आईआरआर. इफ रिस्क इज इक्वल टू बीटा, देन IRR helps me derive the risk of any project through its future cash flow. So, so this IRR value will become my beta. Not a complete beta, but at least this will act for my financial risk in the project, which I can then merge with my business risk, because वो तो कांस्टेंट रहेगा. देखो, एक इंडस्ट्री का बीटा एसेट कांस्टेंट रहेगा, दूसरी इंडस्ट्री का बीटा एसेट कांस्टेंट रहेगा. वो अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं और अलग अलग नंबर्स हमेशा से रहेंगे, क्योंकि हॉट एयर बलून इंडस्ट्री का रिस्क बिजनेस का अलग है और वाटर का बिजनेस का रिस्क अलग है. बट क्योंकि तुम एक दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रहे हो, तो तुम्हें अपनी इंडस्ट्री का बिजनेस रिस्क लेके चलना पड़ेगा. तुम उस एरिया का बिजनेस रिस्क इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक टेम्परेरी एंगेजमेंट है, जस्ट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड टू डाइवर्सिफाई द फंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू जनरेट मोर रिटर्न्स. क्योंकि इन दी एंड मेरे को शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मैं जैसे मर्जी करूँ. उसके लिए जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर को ही अपना फंड डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. मैं भी तो उसका फंड लेके डाइवर्सिफाई करके उसको रिटर्न लाके दे सकता हूँ.
क्लियर? यस। हम्म। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ practically you will be adjusting this BE. Now, how do you know or how will you assess as to whether my beta means very risky, less risky, or no risk? देखो, बीटा अगर रिस्क बता रहा है तो उसका लेवल भी तो उसका कोई स्केल होगा ना। उस स्केल को समझना हमें जरूरी है कि वो किस स्केल पे मैं ये मान के चलूँ कि हाँ भाई, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डिराइव हो रही है या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी जो डिराइव होगी मेरे इन्वेस्टर के लिए, वो मेरे लिए एक तरीके से रिस्क फ्री है। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर का पैसा भी किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ तो मुझे सामने से पता होना चाहिए ना कि वो दूसरी जगह का इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है कि नहीं है। या फिर वो ज़्यादा रिस्की है तो फिर मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, और अगर वो कम रिस्की है तो वो मुझे कम रिटर्न देगा। सो इफ द वैल्यू of beta is greater than 1, this means that your investment is risky. If your beta is less than 1, the investment is less risky. और अगर बीटा इज इक्वल टू 0, then it is a risk free investment. अब वो कैसे रिस्क फ्री हो गया? तो एक चीज देखो, अगर मैं बीई की वैल्यू 0 कर देता हूं, ठीक है, तो एनी प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 0, तो मेरा के इज इक्वल टू आर एफ नहीं हो गया? सोचने वाली बात बनती है ना, क्योंकि आर मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम में, मेरा जब रिस्क देखो, टेक्निकली इक्विटी रिस्क प्रीमियम मेरा 0 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क फ्री से ऊपर कुछ मेरा प्रोजेक्ट देने ही नहीं वाला। मतलब टेक्निकली इट इज एज गुड एज अ गवर्नमेंट बॉन्ड। वो उस पॉइंट पे जाके चल रहा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली बीटा के हिसाब से ही हो गया कि मेरा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। बात क्लियर हो गई यहां तक? Yes. यस। ड्यू टू ऑल दीज थॉट प्रोसेसेस, this makes one thing clear. This makes us clear with few more things, that how CAPM is advantageous for us. One, it will work best with diversified investors as a portfolio. Two, it focuses on the risk split. So business risk is also undertaken, and also the financial risk. Plus, it is specific to investments rather than the whole business. And it will somehow, to an extent, inculcate the cash flows. क्यों? क्योंकि अगर तुम
इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने जा रहे हो तो तुम कैश फ्लोज के थ्रू चलोगे। हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया हुआ है, हमने कैश फ्लोज लिए हैं, तो टेक्निकली मेरे एक्चुअल रिटर्न्स इनकलकेट हो रहे हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट में डालना है या नहीं डालना है तो वो मेरे लिए और क्लियर हो गया। अगर ये सारी चीजें मेरे लिए एडवांटेजेस है तो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक चीजें क्या बनेंगी? इट विल नॉट वर्क with investors that are not diversified. टू, इस पूरे इसमें हमने एक चीज नोटिस करी, टैक्सेशन इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करूं तो वो टैड को लेता है, टैक्स को एक हद तक लेता है, ठीक है। बट क्या कैपेम अपने आप में रिस्क फ्री रेट के पास में, या फिर रिस्क का ये जो अपना मार्केट पोर्टफोलियो, क्या वो चीज टैक्स को अंडरटेक करके चल रहा है? क्या उधर कोई टैक्सेशन के अंदर मेरे को एडजस्टमेंट दिख रही है? मैं सिर्फ अपने रिस्क के अंदर टैक्सेशन ले पा रहा हूं, बट क्या मैं कैपेम के अंदर कहीं और टैक्सेशन ले पा रहा हूं? ना मैं वो डीवीएम में कर पाता हूं, ना मैं कैपेम में कर पाता हूं। इनपुट्स मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, या तो मार्केट वैल्यू या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत बार क्या होगा, बहुत बार ये होगा कि मेरे को कुछ डेटा जो है, अब जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरे को वाटर इंडस्ट्री का जो रिस्क है वो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं मिल सकता, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसका रिस्क स्प्लिट करके कहीं से एक सोर्स बताया कि मेरे को कि भाई अच्छा वाटर इंडस्ट्री का रिस्क है 2, वाटर इंडस्ट्री का रिस्क है 3, वो फिगर है ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हेंस वो एक अनदर प्रॉब्लम है कि जो मेरे इनपुट्स जाएंगे एक फॉर्मूला के अंदर, वो मेरे सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्लियर? यस। ये हो गया तुम्हारा प्लेन कैप। नाउ वी विल मूव टू हाउ डू वी actually adjust the risk. So there are steps to it. Let's take a break for 5 minutes and then we'll resume back. ठीक है। With risk, coming down to with risk, see there are steps to calculate it, ठीक है, and those steps are something that you will have to memorize with practice. Now how do we find beta? First thing is step 1, find the appropriate asset beta. Step 2, proxy beta from the business that exists in the market may be given to the question, or hence we will have to find. If given, safe. If not, calculate. अनसेफ नहीं बोल सकते क्योंकि इतना भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। स्टेप 3 is when, if not given,
then de-gear the beta equity that is provided to you. Now, how do you de-gear and what does de-gear mean? De-gear means the process of splitting the beta into two parts. That is beta equity and beta asset. Formula is given to you in the exam, but we will not stick to the exam formula. We will learn it. Beta asset is equal to beta equity multiplied by bracket open value of equity divided by value of equity minus value of debt 1 minus t, where VE is equal to value of equity, VD is equal to value of debt, beta E is equal to beta equity, and beta A is equal to beta asset. Step 4 is adjust the asset beta of the company making the investment. Till here, you are focusing on the prospective company. This area is focusing on the prospective company. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तुम लोगों को, तो दिस इज या वाटर इंडस्ट्री वाली कंपनी एंड हियर इट इज योर हॉट एयर बलून वाली कंपनी. स्टेप 5, re-gear the beta using the same formula, which means you will incorporate new value based on the investment, based on the adjustment as per the question, and put it back into the formula to derive your own company's beta equity for CAPM. Step 6, calculate K using CAPM. Chalo, I have a question. Binod Co is a hot air balloon company whose equity to debt ratio is 5 is to 2. The corporate debt, which is assumed to be risk free, has yield of 11%. The beta value of the company equity is 1.1. Average rate of return on the stock market
is 16%, and the taxation that prevails is 30%. The company is considering a project in water bed manufacturing. Desico is a waterbed company. It has equity beta of 1.59 and equity to debt ratio of 2 is to 1. Binod wants to maintain the same capital structure even after the implementation of the new project. What is the risk adjusted gain? Solution. Step 1, step 1 is find the asset beta of the home of the new company. What is given to us? We have been given equity beta 1.59. Why do we have asset beta? No. What do we do? We split the equity beta of Desico and extract the asset beta out of it, which means we de-gear. So beta equity is given 1.59. Gearing ratio is इक्विटी टू डेट. ध्यान रखना हर जगह तुम्हें डेट टू इक्विटी बोलते हैं, यहाँ पर तुम्हारे साथ उल्टा चल रहा है गेम. फॉर्मूला क्या है? बी ए इज इक्वल टू बी ई मल्टीप्लाइड बाय वी ई डिवाइडेड बाय वी डी, वी ई प्लस वी डी 1 - टी. बीटा इक्विटी इज 1.59 यहाँ पर दिया हुआ है. वी डिवाइडेड बाय वी ई प्लस वी डी 1 - टी कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन. मेरा वी कितना, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 2 है. मल्टीप्लाइड बाय, सो डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन वापस, 2 प्लस मेरा वी डी क्या है, वापस ब्रैकेट ओपन होगा, मेरा वी डी इज 1. मेरा टैक्स रेट क्या दिया था? 30%, तो -0.3 मैंने बोला था, डेसिमल में लोगे. मैं इसको बंद कर दूंगा वापस ब्रैकेट्स को. मेरा आंसर आ गया इतना. अब मेरा बी ए क्या बोलता है? मेरा बी ए ये है. तो अगर मेरे पास बी ई इधर आ गया है और वी, इसके मेरे पास वी ई प्लस वी ई, हाँ वी ई डिवाइडेड बाय वी प्लस वी डी 1 - टी की अगर मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो मेरे को टेक्निकली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा. तो मेरा बीटा एसेट आ गया इधर. बट दिस इज बीटा एसेट ऑफ व्हाट? दिस इज बीटा एसेट ऑफ देसी को.
अब मेरे को, क्योंकि ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, मेरे को इसको अपने कंपनी में, जो मेरी हॉट एयर बलून वाली जो कंपनी है, मुझे उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ। हाँ। तो स्टेप 3, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट में अब मेरे को क्या, मेरे को बीटा इक्विटी चाहिए, मेरे पास है नहीं। क्यों नहीं है? मैं देखो, इसने ये बोला है कि मेरा जो बीटा इक्विटी विनोद का 1.1 है, बट इस 1.1 के अंदर क्या ये 1.18 वाला बीटा एसेट इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाला ही नहीं, ये कंसिडर कर रहा है अभी तक। अगर इसने ये कंसिडर कर चुका होता तो ये 1.1 होता, तो मेरे को तो ये सब करने का कोई तामझाम ही नहीं करना पड़ता। ये कंसिडर कर रहा है, तो अगर ये देसी को कंसिडर कर रहा है, तो टेक्निकली मुझे बीटा एसेट लेना पड़ेगा ना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसने 1.18 को इनकॉर्पोरेट किया है, 1.1 में नहीं किया है अभी तक। तो मेरा टेक्निकली बीटा इक्विटी है ही नहीं। अब बीटा एसेट मेरे पास है, किसका है मेरे पास? उस कंपनी का है, देसी को का है। क्यों है? क्योंकि टेक्निकली मुझे उसी का अब फाइनेंशियल रिस्क लेना है, क्योंकि बिजनेस तो मेरा चल रहा है, मेरा बिजनेस रिस्क रहेगा, और उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क रहेगा, क्योंकि मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। तो उसके कारण मेरे को अपना फाइनेंशियल रिस्क चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। अब मैं गेयरिंग में कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर लूंगा? देसी को की नहीं ले सकता, क्योंकि देसी को की अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ले लूंगा तो इसका मतलब देसी को और मेरे में कुछ फर्क तो बचा ही नहीं। और अगर मैं वही चीज कर दूंगा तो फिर टेक्निकली मुझे देसी को का इक्विटी दिखेगा, बीटा इक्विटी दिखेगा। तो मैं लूंगा अपनी कंपनी का, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के अंदर इस रिस्क को करना है। मेरे शेयर होल्डर्स किसके हैं? मेरे शेयर होल्डर्स विनोद के हैं। मैं विनोद के शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि देसी को के शेयर होल्डर्स खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देसी को के शेयर होल्डर्स का काम देसी को का फाइनेंस मैनेजर देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। ठीक है। अब बीटा एसेट इज इक्वल टू वही वही कहानी, मैंने आपको बोला था वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। अब एक चीज देखो, अब इस अगर फॉर्मूला को मैं देखूं तो 1.18 इज इक्वल टू एक वाई मल्टीप्लाइड बाय, क्या बना, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.3। यही हुआ। अब वही मैं सबसे पहले अपना वी माइनस वी डी निकाल लेता हूँ, मैं अपना ये वाला, जस्ट टू बी वेरी क्लियर ऑफ। तो इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइडेड बाय, वापस ब्रैकेट ओपन 5 प्लस, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय वी डी कितना है मेरा डी, ऑलरेडी मैंने 2 ले लिया है, टैक्स मेरा 0.3 है, तो टेक 1 - 0.3 0.7 आ गया मेरा ये। सो टेक्निकली देन दिस मीन्स मेरा 1.18 इज इक्वल टू वाई 0.78125 वाई। तो मेरा बीटा इक्विटी विच इज टेक्निकली डिनोटेड एज वाई ओवर हियर जस्ट फॉर इंटीजर पर्पसेस हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस। हाँ या ना? बेसिक मैथ्स। यस। अब एक चीज देखो,
जब मैंने इस 1.1 को मैं देखता हूँ विनोद को, ठीक है, तब मेरा तब इसके अंदर ये वाटर कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इसका फाइनेंशियल रिस्क ऑफ 1.18 ले लिया, रिस्क ले लिया 1.18, तुरंत मेरा भी रिस्क इंक्रीज हो गया। बात आई समझ में? हाँ, समझा। तो अब मैं कैपेम निकाल लूं अपना। कैपेम का फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल, अच्छा, हाँ, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीई मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। आर एफ मेरा क्या था? 11%। देखो मैंने ऊपर दिया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉर्पोरेट डेट विच इज अज्यूम टू बी रिस्क फ्री, डेट रिस्क फ्री है, 11%। रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट मतलब रिटर्न ऑन मार्केट हो गया मेरा, तो 16% है। ठीक है, ले लिया। मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम कितना निकला? आर एम माइनस आर एफ निकला। यही तो था ना, आर एम माइनस आर एफ, मैंने बताया था। बीटा इक्विटी मेरा कितना निकला? 1.151 निकला। अब अगर मैं केई की बात करूँ तो कितना निकलेगा? इज इक्वल टू, मेरा आर एफ कितना है? 0.11 प्लस बीटा इक्विटी कितना है मेरा? ब्रैकेट ही लगा लेता हूँ जिससे कुछ गड़बड़ नहीं होए। 1.51 मल्टीप्लाइड बाय, मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है? 0.05। निकल गया। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। आ गया मेरा आंसर। क्लियर? यस। यस। कि कैपम किस तरीके से आया रिस्क के साथ। जी। अब अगर हाँ, बीटा समझा। इक्विटी, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉक्सी कंपनी है ही नहीं और तुमको सीधा सीधा बीटा इक्विटी दे रखा है, अब आरएफ दिया हुआ है, आरएम दिया है, तो वो विदाउट रिस्क हो गया। क्लियर? यस। अब अपने पास आता है नेक्स्ट, कॉस्ट, विच इज कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ डेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द ट्रेडेड डेट, टू इज द नॉन ट्रेडेड डेट। Traded debt is the debt that revolves in the stock market, does not revolve on the stock market, hence non-traded. Now, traded debt is of three types. TA, irredeemable debt. TB, redeemable debt. And TC,
convertible debt. Coming to TA, we have a basic assumption out here that the interest payment will be there in perpetuity without, and what is irredeemable debt? Repayment through interest without principal being repaid. So technically, this assumption becomes a fact. Now, the market value of this debt is equal to interest, which is denoted as I, divided by KD, where MV is equal to market price in dollar of the loan note in year zero. I is equal to interest rate in 1 year time, and KD is equal to debt holder rate of return. Eventually, if I rearrange this and include taxation to it, then KD 1 minus T is equal to I, which is interest multiplied by 1 minus T, where market value, rearranging them with the tax inclusion because the debt is cheaper because of the tax deductibility. Then you have TB, which is redeemable debt. The assumption out here is market price or value of the debt is equal to future income stream from debt and its types discounted at investors required rate of return. Now, what are the expected income stream? One, interest paid to the debt holders until redemption. Two, principal amount repayment. Now, how do we do this? We have a format to this. You take up time, you take up particulars, you have cash flows, then you have discount factor at the rate of return of an investor, which is KD.
and then you have present value. At time 0, then you have time 1 to nth year, then you have time in the nth year. Here goes your market value. Here you have your interest payments. Then you have your capital repayment. This becomes your balancing figure. Interest payments are given to you through the coupon rate. Capital repayment is given to you. Here you take out the annuity factor. How do you calculate annuity factor? You will calculate it PEV minus PEV, open bracket, rate, comma, number of years, and then put 1. This is your discounting factor in the nth year. Multiply DF with cash flows. Here it will be annuity factor. In year 0, your discount factor will always remain 1. This is the negative sum of the below. And your NPV has to be 0. We will do a question tomorrow on this. Then you have convertible debt. TC, convertible debt. Now, how do you find convertible debt? KD1 minus T is equal to IRR of the cash flows. Step 1, calculate the value of the conversion option, the choice, using the data given in the question. Step 2, compare it with the cash option. Assume that the investor will take the higher value. Step 3, calculate the IRR as for the redeemable debt. See, when you are doing a redeemable debt, ठीक है? For example, you are on here 0 year 1, 2, 3, 4. There is a loan for 4 years, ठीक है? The market value of it was, for example, 98. So technically today you're paying 98. You were paying an interest of maybe 5 per year. It will be now redeemed at a nominal value. Nominal value of every debt is 100. So it will be 100 plus the interest for the fourth year, which is equal to 100 plus 5. So if I have to find whether I am able to see, or I have to find ki what is the risk of it, or what is the actual KD1 minus T for it. These interest payments are, for example, tax adjusted. ठीक है? So I will just put an IRR. I'm getting 6%. Why an IRR? Because they have considered debt को भी एक as a project की तरह कि how much is the risk. So technically when I am doing an IRR, I'm able to find how much is the risk of return of the debt, because I cannot see over here any KD. My KD 1 minus T is 6% out here.
Had I have had any KD out here, I would have used this and I would have got the market value. So technically, now the point that I have to make over here is, in case they give you a KD and you have to find a market value, you'll be using this table. Had you have the market value which is T0 pay this market value which is minus 98, and you want to find what is the return that an investor will get, just find the IRR, because this return on investment, like we learnt in investment appraisal, okay, will tell me that how much cash flows are risky for a debt investor when he is investing into a company by providing loan. Clear? Yes. Yes. ये हो गया convertible debt. Then you have non-traded debt. Now in non-traded debt you just have bank loan. So the cost of company over here is equal to interest rate multiplied by 1 minus tax rate, which technically is KD 1 minus T is equal to I multiplied by 1 minus T. Done. This is majorly how you find cost of debt. Now, basic understanding of debt. Basic characteristics of debt. Debt is quoted on block of 100. Interest paid on debt is known as yield rate or coupon rate. The concept of X div share price is also applicable in the same manner for debt. ये जो है, अगर मैं इस टाइमलाइन को देखूं, ठीक है, तो डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो डेट प्राइस, the quotable market value price before will be known as cum interest debt, and after interest payment will be known as X interest debt. Clear? Yes. This technically wraps up your revision segment for business finance cost of capital practical area fully, wherein we did the breaking of source of finance. We understood how risk is incorporated. We understood how KE is calculated. We understood how debt is calculated. And tomorrow we will see how we calculate cost of debt for each three types of the debts, and then have a master question on WACC with risk and without risk, and we'll be good to go. Hmm.
pretty much this closes off for the day.